Can everybody see my screen? Yes. Is my screen visible to everybody? Yes, no, yes, no. Okay, G, okay, G, okay, 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 okay. So we are officially starting with our May June 2025 session, and as this presentation or short video shows, that my name is Mohammad Sulman Khan, and I am one of the founders of Conceptuals Academy. And we came up with this academy 2 years ago, or maybe even 3 years ago now. And the founding partners are Sir Basit, Sir Ali Abbas, and I'm obviously there. And we came up with this idea that we will be the teachers who will focus more on concepts, and the grades are just going to be the byproduct. So, a little about myself. Let me just forward this video. Yes, okay. So, I took my O levels back in some time, and then my A levels as well. I scored A stars in my O levels, in my A levels, and then I was also a part of the Pakistan national chemistry team, a proud alumni, a proud alumnus कहना चाहिए. And then I've worked on oral squamous cell carcinoma. I know it sounds bougie, but yes, I've worked on oral squamous cell carcinoma in precision medicine lab, and then I've also worked in the National Forensics Science Lab. I was working as an assistant in the narcotics laboratory. उधर हम चर्स का काम करते थे, चर्स वीड, वो वॉल्टर वाइट जो नहीं करता ब्रेकिंग बैड. दोज ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन ब्रेकिंग बैड, वी वर एक्चुअली टेस्टिंग फॉर दीज थिंग्स, मेथएम्फेटामीन, जो आपका क्रिस्टल्स नहीं होता, मेथ जिसको आप कहते हैं, उसका असल नाम है मेथएम्फेटामीन. तो उस पर हमने बड़ा काम किया. 6 सालों का मेरा एक्सपीरियंस है, 6.5 years, and almost all my students end up with A's and A stars. All the students who attend my classes, this is the criterion, that all my students who attend my classes, I count their grade as my grade. So all of them almost get A stars and A's, and then obviously a few of my students have also secured distinctions, 9 distinctions in O levels and IGCSE. And then there are a lot of U to A star success stories. So a lot of students who have previously secured, it's not secured, but previously gotten U's in their examinations in this 4 month period that they study with me, they end up with A's or A stars. So there are a lot of success stories. They are posted on the Instagram page. तस्वीरें साथ हम इसलिए लगाते हैं कभी कभार. अब तो हमने बहुत अर्सा हो गया पोस्ट नहीं किया, लेकिन जिनका पोस्ट भी किया उनके साथ तस्वीरें लगी हैं, क्योंकि a lot of academies, and I know their founders personally as well, they fake these things. हमें अच्छा नहीं लगता फेक करना. तो भाई ये हिसाब किताब है. देन बाय प्रोफेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी में हूँ. आई वर्क एट PwC, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स. और मेरा जो है प्रोफेशन जो है सारा फाइनेंशियल जो है सेक्टर में है, rather than chemistry. And there's a huge difference between what I teach and what I actually do for a living. This is just my hobby. I do it because I enjoy teaching. I've been teaching, and that's pretty much that. I just got a U today in my seasonal. Chalo Sheikh Ayan Saab, we're gonna fix that. Then my teaching philosophy. So I have a few problems with the education system in Pakistan. Students, they focus on shortcuts. They're like, and even teachers, they're like, bas case 1 padhao, case 2, case 3, case 4, or baat khatam, without giving any concept whatsoever, right? And that is my, that is where I start to get a little irritated with even the teachers and the students. Ki bhai, aap concept do, grade is just the byproduct of the knowledge that you learn in class, right? So I will be focusing more on concepts, and then obviously with concepts I do all the questions on my own. I don't believe in any homework whatsoever. मैं हमेशा कहता हूँ, you ask why you learn. So as a good science student, you should always be asking the question why. Sir, ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है. And if you are unable to ask such questions, then I'm sorry, but you are not a good science student. So I encourage a lot of questions, and you guys don't have to do anything. If you are taking my classes, you don't need to read the textbook. You don't need to read, I've been getting a lot of DMs lately. Sir, textbook padhni hai, ye lena hai, wo lena. You don't have to do anything.
You just have to take my class. That's it. Just take my class. And please, if you miss a class, if I'm teaching and you've apparently missed a class or two, be up to date before sitting in a live class, because chemistry is very, very, very connected. Unlike physics and math, where you have different chapters, chemistry is very coherent. It's very connected. It's like a story. So if you miss one class, प्लीज़ डू नॉट सिट इन द लाइव क्लास. आप पिछली रिकॉर्डिंग देखें और फिर लाइव क्लास में बैठे. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन मिसिंग क्लासेस, बट यू नीड टू बी अप टू डेट इफ़ यू आर सिटिंग इन द लाइव क्लास. ठीक है, तो ये मेरी थोड़ी सी और मेरी फिलोसफी ये भी है कि द रीज़न वाई आई टीच इज़ नॉट बिकॉज आई डू इट फॉर ब्रेड एंड बटर. वो मैं अपने फाइनेंशियल सेक्टर से इतना अच्छा खासा कमा लेता हूँ कि इधर मैं 50-60 लोगों को भी पढ़ाऊँ हर महीने, तो उससे काफ़ी ज़्यादा है. बट द रीज़न वाई आई टीच इज़ टू क्रिएट एन इम्पैक्ट इन द सोसाइटी, टू इन्फ्लुएंस young minds. जो आपके छोटे छोटे जो हैं ख्वाहिशें हैं, उनको हम सच बनाना चाहते हैं. आई वॉन्ट टू इग्नाइट अ सॉर्ट ऑफ एम्बिशन इन यू गाइज टू बी एंटरप्रेन्योर्स, टू बी बिग पीपल, टू बी ग्रेट साइंटिस्ट. इवन पाकिस्तान ने पिछले इतनी सदियों में से कोई साइंटिस्ट नहीं बनाया. एक डॉक्टर अब्दुल सलाम थे, एक डॉक्टर AQ खान थे, उसके बाद हमारा कोई साइंटिस्ट ही नहीं है. इंडिया में हर दिन साइंटिस्ट आते हैं. हम चूँकि अपने आप को इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं ना, तो वी हैव अ लॉट ऑफ साइंटिस्ट brewing in India, but in Pakistan, unfortunately, we have only created 2 scientists. बाकी सारे लकीर के फ़कीर हमने पैदा किए हैं. So that is my aim when it comes to teaching, which is to create a social impact, a positive social impact. ठीक है जी, हाँ जी हाशिम, ठीक है जी. Perfect. Acha. फिर classroom expectations. Yes, I'll be covering the entire course content. It's full syllabus coverage, which means I will assume that you guys don't know anything about chemistry. And if you don't know anything about chemistry, and even if you know stuff about chemistry, I would recommend pressing Alt F4. Alt F4 का मतलब क्या है? Delete करें, please. All the chemistry that you've learned till date, delete it from your minds. I will be starting fresh. बिल्कुल simple तरीके से मैं chemistry कहानी के तौर पे पढ़ाऊंगा, और आप देखेंगे by the end of these 4 months you are gonna be chemistry geniuses इंशाल्लाह. Topical past paper practice हर chapter के साथ चलते रहते हैं. Chem checks जो है, इसको AKA rests भी मैं कहता हूँ, जो आप आहिस्ता आहिस्ता हर चैप्टर के एंड में या बीच बीच में हम कुछ सवाल करते होते हैं. और our timings are gonna be Monday to Thursday 8 p.m. to 9 p.m. WhatsApp groups are there for 24/7 support. I'm there obviously, and please do not DM me for questions related to the chemistry syllabus or related to the chemistry course, because I would recommend not DMing me, rather discussing it in the discussion forums or in the groups or in the respective group, because I feel like if you discuss it in a group, then when I answer there, फायदा ये होगा कि सबको फायदा मिलेगा, right? Instead of you just asking me personally, sir exothermic क्या होता है, ग्रुप में पूछेगा, सबका भला होगा, right? तो ग्रुप में आप पूछेगा. P4 ATP तो मैं ऐसे कवर करता हूँ जैसे आप कहेंगे वाह वाह वाह. तो ATP की कवरेज भी मैं देता हूँ. मैं इस साल what I'm planning on doing is I'm also going to record a lot of experiments that Cambridge has been, I've kind of gotten the hang of where Cambridge is getting their experiments from. So I'm going to record each and every experiment with precautions, with safety measures and so on and so forth for you guys, so that you guys can ace your ATPs as well. और ATP की full coverage मैं करता हूँ इंशाल्लाह. ठीक है. एक बुक है, टॉपिकल बुक है, 1750 पेजेस, वो पब्लिशिंग में इंशाल्लाह मिल जाएगी, तो वो कोई इशू नहीं. और Q&A सेशन तो हर क्लास के दौरान चल रहा होता है, बिकॉज ऑब्वियसली वी ऑल लाइक आवर इंटरैक्टिव क्लासेस. देन also guys, I hate a boring classroom. Please, I would like you all to talk with me from time to time, even in the group chats. मैं थोड़ा शुगली बंदा हूँ, तो शुगल मेला लगता रहता है, गपशप भी लगती रहती है. तो I would like you all to interact with each other even in the group chat, but obviously remain keeping your limits and boundaries in mind. किसी की इंसल्ट ना करें, डिसरिस्पेक्ट ना करें. बाकी गपशप तो लगती रहती है. हमारी केमिस्ट्री वाली टीचर मुफ्त के मार्क्स कहकर स्किप कर देती है. नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे. द कैलकुलेटर इज पिंक टू इंश्योर इंटीग्रेशन of everyone. ठीक है जी. अच्छा, essentials for the class. You guys all need a print of the periodic table which will be shared with you guys. You need a scientific calculator. Obviously Zoom सबके पास downloaded है, इसलिए आप सारे इधर बैठे हैं, और सारे lectures connected, and that's why I say you need to be up to date before sitting in a live class. You cannot sit in a live class before watching the recordings that you've missed. Please, you will not understand anything if you've not watched the previous recordings. ठीक है जी. और बस अब आप मैजिक देखना
लिखना शुरू करें। और क्या है इसमें, कम्युनिकेशन वही है, ये व्हाट्सएप ग्रुप से। अच्छा, अ सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप विल बी क्रिएटेड फॉर दो स्टूडेंट्स हु ऑफिशियली रजिस्टर्ड थ्रू मिस नूर। तो मिस नूर को आप मैसेज कर सकते हैं और आप प्रॉपरली रजिस्टर हो सकते हैं फॉर द सेशन। द फर्स्ट फ्यू क्लासेज आर फ्री फॉर ऑल, तो आप अपने दोस्तों को इन्वाइट कर सकते हैं। और ये यूट्यूब पे भी मेरे अपलोड होगी। मेरे यूट्यूब का नाम है कार्बोक्सिल कैम्प, तो आप यूट्यूब पे कार्बोक्सिल कैम्प डालें, यू गाइज विल फाइंड मी देयर। एंड देन माई ई मेल इज दिस, यू कैन ई मेल मी stuff, you can, you know, this is my contact, this is Miss Noor's contact for registrations, you guys can take a screenshot for this. सर आप मेरे टीचर की तरह पंजाबी बात तो नहीं बोलेंगे? नो, आई टॉक मोस्टली इन इंग्लिश, आई स्विच टू उर्दू बिकॉज ऑफ सम स्टूडेंट्स। तो बीच बीच में मैं उर्दू बोलता रहता हूँ, बट बिकॉज यू गाइज विल बी अपीयरिंग इन योर Cambridge examinations in English, that's why we will stick to English as the mode of communication. नहीं, मैं पंजाबी में गालियाँ नहीं देता। मेरा इंस्टा क्या है? मेरा इंस्टा है SULLI_KHAN, so it's @Suli Khan. That's my Insta, but please DM me before sending me a request because I have a lot of requests pending, तो मुझे पता चले कि आप एक स्टूडेंट हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये हमारे फाउंडर्स हैं, मैं हूँ, सरबास हैं और सरबासित हैं। थैंक यू एवरीबडी फॉर वाचिंग दिस ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन एंड यू गाइस कैन ऑब्वियसली रजिस्टर विद द नंबर प्रोवाइडेड। अच्छा, ये बताएं, एमी शुगल में मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई थी। अब हम शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर, which is basically moles and stoichiometry. Are you all with me? Moles. Moles. Let me just write this down. Wait. Moles and stoichiometry. मेरी राइटिंग शुरू में थोड़ी सी गंदी होती है क्योंकि मैं राइटिंग ज़्यादातर नहीं करता। हमारे चार्ट अकाउंटेंट्स का काम सारा एक्सेल पे होता है, तो अभी थोड़ी दिनों बाद ठीक हो जाएगी। थोड़े ऐसा मुझे दीजिएगा 1-2 दिन, तो मेरी राइटिंग इंशाल्लाह विल बी बैक ऑन ट्रैक। ठीक है जी। अच्छा, कैन आई गेट गुची इन द चैट बॉक्स? कैन एवरीबडी राइट गुची गुची गुची, ताकि हम शुरू करें। The reason why we're starting off with moles and stoichiometry is because, no, I don't need yes, I need Gucci, yes, thank you. The reason we are starting off with moles and stoichiometry is because a lot of students are properly scared of this chapter. Some even start questioning their existence. You know, this is the chapter which is, you know, for most students, it's very deadly, and even organic chemistry is very deadly. So after this, we'll also start off with organic chemistry, just to show you guys that things are pretty easy. You just need to attend the classes. Once we are through with moles and stoichiometry, I promise you, all moles and stoichiometry related questions, including titration and blah 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 blah, all will be a piece of cake for you guys. ठीक है, मैं ये दावा करता हूँ कि पेपर में कोई सवाल आए मोल्स एंड stoichiometry का, किसी से अगर ना भी हो तो आप लोगों से होगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, provided you guys attend the classes, that's it. So the question is, why do we study moles and stoichiometry? Well, moles, you know, hold a very very huge importance for scientists because moles is related to particles effectively, right? तो moles जब हम पढ़ते हैं, हम particles के बारे में पढ़ते हैं, atoms के बारे में पढ़ते हैं, molecules के बारे में पढ़ते हैं। And what you need to understand is कि chemistry में a lot of reactions take place on a very 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 micro level. तो रिएक्शंस जब हो रहे होते हैं, हमारे साइंस में बहुत ज़्यादा रिएक्शंस होते हैं और बहुत माइक्रो लेवल पे होते हैं। देयर आर एटम्स इन्वॉल्व। व्हाट आर एटम्स? एटम्स आर पार्टिकल्स विच यू कैन नॉट सी विद योर नेकेड आई। दे आर द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। दे आर छोटे छोटे टीनी 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 टाइनी पार्टिकल्स विच मेक अप दिस एंटायर यूनिवर्स effectively, right? So reactions take place on that molecular level, on the level of atoms, right? And for that you need to be able to count the number of atoms. But the problem is that atoms are very 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 tiny. You know, even in this particular dot right here, there are millions and trillions of atoms. Then how do scientists know that there are millions and trillions of atoms in this particular dot? How do we know that there are, you know, a billion atoms in something and there are a trillion atoms in something? Do scientists sit down and count the atoms? Duh, they don't. Obviously not. Why? Because an atom cannot be seen with your naked eye, right? You can't even see an atom, let alone count them. How are scientists able to know how many atoms there are in certain things? Think about it like this. आजकल सोना कितने का बिक रहा है? How much is gold nowadays? I think it's for 300,000. Nowadays, एक तोला सोना जो है 3 लाख रुपए का मिल रहा है. Do you know a bar of gold contains 4.0 into 10 raised to the power 25 atoms of gold? Do you know how many atoms these are? 4.0 into 10 raised to the power 25. That's a 4 followed by 25 zeros. तो अगर मैं लिख लूँ आपके पास 4, 1 2 3
6, 9, 12, and then that's like your 15, 18, 21, 24, 25. These many atoms are there in a bar of gold. How did scientists know this? How did scientists come out? What is this called? It's 40 septillion. How do you say this? It's 40 septillion, or you could say 4,000 sextillion. Sextillion has 21 zeros. It's a unit of counting, right? तो इधर हम बड़े बड़े नंबरों की बातें करेंगे, right? So a bar of gold contains 4,000 sextillion atoms of gold, 40 septillion atoms of gold, so many atoms. Do you know how many atoms are there in the average human body? You have 7 into 10 raised to the power 27 atoms. That's 7 octillion. Octillion में 27 zeros होते हैं. These many atoms are present in an average human body which weighs about 68 to 70 kilos, right? kgs. तो इतने ज्यादा atoms, how are scientists able to count them? अगर scientists count करने लगे तो उनकी सारी जिंदगी गुजर जानी है. They won't be able to count these many atoms. Then how do we know that a bar of gold contains 4,000 sextillion atoms? An average human body contains 7 octillion atoms. Well, we know this because of the concept of moles, right? Now, what is a mole? Is it the animal mole we are talking about? वो जो छोटा सा एनिमल होता है ज़मीन के अंदर जाता है. और is it the black spot on somebody's face, you know, काला काला एक बड़ा सा spot भी होता है, उसको भी हम मोल कहते हैं. और sometimes students, you know, tend to snitch on each other. हमारे टाइम में उसको rat कहते थे. In Gen Z language, you now know them as moles, you know. Oh my God, the mole snitched on me, blah blah blah. No. In chemistry, mole is something totally different. And to understand a mole, you first of all need to understand the concept of dozen. You know, let's suppose you go to a fruit shop. Let's suppose you have Aline going to a fruit shop, and Aline says, "Hey, shopkeeper, I need 1 dozen eggs." How many eggs does the shopkeeper give Aline? If Aline needs 1 dozen eggs, how many eggs does the shopkeeper give? Obviously, he's going to give Aline 12 eggs, right? Now, let's suppose, you know, Amna Khan goes to a shop and she says, "Hey, give me 1 dozen apples." How many apples will she get? How many apples? Obviously, 12 apples. Let's suppose somebody else goes to the shop and they say, "Hey, give me 1 dozen bananas." How many bananas do we get? 12 bananas, yeah? Now, if you focus on all of them, their sentences, there is nowhere the mention of the number 12. How does the shopkeeper know that you're talking about the number 12? आमना ने तो किसी जगह में भी नहीं कहा कि मुझे 12 अंडे चाहिए या मुझे 12 एप्पल्स चाहिए या 12 bananas चाहिए. How did the shopkeeper realize that you're talking about the number 12? How does the shopkeeper know? Well, he knows once you say dozen. Oh my God. Once you say the word, where's the highlight? Once you say the word dozen. Every time you say dozen, the shopkeeper automatically understands that you're talking about the number 12, right? So a dozen literally represents a number which is 12. Just like a dozen represents a number 12, a mole represents a number which is 6.02 into 10 raised to the power 23. Just like a dozen is a unit of representation, every time you say dozen, it is automatically understood that you're talking about the number 12. Every time you're going to say a mole, it will be understood that you're talking about the number 6.02 into 10 raised to the power 23, which is 602 sextillion. सेक्सटिलियन में ना 21 zeros होते हैं, तो 602 sextillion कह दें या 6.02 into 10 is power 23 कह दें. So if now you go to the shop and you say, "Hey shopkeeper, give me 1 mole apples." How many apples should the shopkeeper give you? How many apples should the shopkeeper give you? Anybody. He should give you 6.02 into 10 to the power 23 apples. Yes, sir. If you say, "Hey shopkeeper, give me 1 mole eggs." How many eggs does the shopkeeper give you? 6.02 into 10 to the power 23 eggs. If you say, "Hey, Sir Suleiman teaches 1 mole students." How many students does Sir Suleiman teach?
6.02 into 10 to the power 23. Now, there's no way the mention of the number 6.02 into 10 to the power 23. But every time you say mole, scientists automatically understand that you're talking about the number 6.02 into 10 to the power 23. Just like every time you say dozen, the shopkeeper understands you're talking about the number 12. Just like that, every time you say mole, the scientists all around you understand that you're talking about the number 6.02 into 10 raised to the power 23. And this can literally be anything, right? Let's suppose I say I have 1 mole of apples. No, not apples. Let's suppose I say I have 1 mole of iPhones. Apple iPhones. How many iPhones do I have? I don't even think they've manufactured these many iPhones. 6.02 into 10 is power 23 iPhones, right? And obviously, what is the population of this world? What is the population of your Earth? Anybody? It's approximately 8 billion. 8 billion. Do you know how much a billion is? It's 9 zeros. So 8 billion has 3, 6, that's a million, and then that's a billion. This is approximately the population of this world. Now, these many iPhones, you have 9 zeros in a billion, and then you have 23 zeros in this number, which is represented by a mole. So just like a dozen represents a number, it's a unit of representation. Can I say a dozen is a unit of representation? Absolutely, I can. It's a unit of representation and it represents the number 12. Just like a dozen is a unit of representation, mole is also a unit of representation. And what does it represent? It represents the number 6.02 into 10 raised to the power 23, right? Let's talk about this number for a moment. Let's suppose I have 1 mole of AirPods. How many AirPods do I have? I wish I had these many AirPods. I'd sell them and become very rich. How many AirPods would I have? Mole. How many AirPods do I have? Guys, come on. 6.02 into 10 to the power 23 AirPods. Yeah? Let's suppose I say I have 1 mole of Lambos. 1 mole of Lambos. How many Lambos do I have? Obviously 6.02 into 10 to the power 23 Lambos. These many Lambos don't exist. I don't know. I think there are like 1,000 or 10,000 Lambos approximately in our dharti. इतने के हर घंटा नया पेड़ use करते हैं. Yes. Lamborghini Aventador. Yes. What if I say I have 1 mole of sodium? How many sodiums do I have? 6.02 into 10 is power 23. That's it. Moles khatam. Itna aasan. These many sodium atoms. Obviously, sodium is an element, right? So for element consists of atoms. So you'll have these many sodium atoms. What if I say you have 1 mole of gold? The symbol of gold is Au. How many atoms of gold are there? In 1 mole of gold, how many atoms of gold are there? 6.02, because you literally said the word mole. It is understood that you're talking about these many atoms of gold. Done? What if I say what if I say you have 1 mole of farts? How many farts molecules do you have? Obviously you have 6.02 into 10 raised to the power 23 fart molecules. Yeah. What if I say you have 1 mole of carbon dioxide? How many carbon dioxide molecules? Carbon dioxide is a molecule, right? So how many carbon dioxide molecules do you have? 6.02 into 10 raised to the power 23 carbon dioxide molecules. 1 mole of oxygen gas. How many oxygen molecules do you have? 6.02 into 10 raised to the power 23 O2 molecules. What if I say you have 1 mole of iron 2 plus? How many iron 2 pluses do you have? 1 mole of iron 2 plus. Guys, how many iron 2 plus do you have? बताएं जल्दी. 6.02 into 10 to the power 23 iron 2 plus ions. Why am I saying ions? Because ions is any charged species. You learn this throughout because we are starting in the middle
तो आप ये सारा पहले 2-3 चैप्टर्स जब हम वापस पढ़ेंगे तो आप सारा पढ़ेंगे कि ये आयंस क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं. बट फॉर नाउ अंडरस्टैंड when an atom has a charge over it, like a 2 plus charge or a 3 plus charge or even a 1 minus charge, whatever the case may be, but whenever an atom has a charge, it's no longer called an atom, you call it an ion. What is an ion? An ion literally is a charged species. Anything which has a charge is going to be called an ion. So if I now say, hey, you have 1 mole of Cl1 minus. How many Cl1 minuses do you have? 6.02 into 10 raised to the power 23 chloride. Ions or atoms? Ions or atoms? Ions or atoms? Obviously ions, because there's a charge right here, so I'm going to call it ions. Done? Now we know that a mole, in summary, we know that a mole is literally nothing to be scared of. A mole just represents a number which is 6.02 into 10 raised to the power 23. And this can literally be anything. This can be iPhones, Apples, whatever. It can be atoms, it can be molecules, it can be ions, it can literally be anything. This number right here. So a mole can represent a number which is 6.02 into 10 to the power 23. But a mole says, hold up, doesn't. I not only represent a number, unlike you're just limited to a number. Every time you say dozen, the number 12 should come in your brain. Every time you say mole, the number 6.02 into 10 is power 23 comes in your brain, but something else should come too. Because I not only represent a number, I also represent the volume of a gas at room temperature and pressure. And that's going to be, sir, 24 dm cube. What is room temperature and pressure in science? जिन्होंने मेरे से पहले से पढ़ा हुआ है प्लीज वो जवाब ना दें. But what is room temperature in science? Room temperature is not a particular temperature, it's a range. 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस को हम रूम टेम्परेचर कहते हैं साइंस में. लेकिन हम अपने ओ लेवल्स IGCSE में यू कैन राइट 20 डिग्री सेल्सियस और यू कैन ऑल्सो राइट 25 डिग्री सेल्सियस, बट रूम टेम्परेचर इज बिटवीन दीज टू टेम्परेचर्स, राइट? सो इट्स 20 to 25 डिग्री सेल्सियस. एंड व्हाट इज रूम प्रेशर? Room pressure in science is taken as 1 atmosphere. And an atmosphere, 1 atmosphere is 100 kilopascals. Pascals is the unit for pressure. आप physics में ये पढ़ेंगे. ये मेरा काम नहीं, physics teacher का काम है, right? So 1 atmosphere is approximately 100 kilopascals. Kilo का मतलब है 1000 ना, तो 1 लाख pascals जो है ना, 1 लाख pascals, वो basically 100 kilopascal को कहते हैं, जो कि एक atmosphere को कहते हैं. Done? So mole says, hold up, I can also represent the volume of gas at room temperature and pressure, and that's going to be 24 decimeter cube. How much is a decimeter cube? Liter. Sir, bilkul simple, liter. Because we are गुलाम्स ऑफ अंग्रेज, तो ब्रिटिश ने हम पे रूल किया है, तो हम ये डेसीमीटर क्यूब इस्तेमाल करते हैं. हम जो है जनाबे वाला, जब हम ब्रिटिश के पेपर्स देते हैं, when we are going to give our Cambridge examinations, we are going to use the word decimeter cube. We are going to use this unit. But a decimeter cube literally means liter. पेप्सी की एक लीटर की बोतल नहीं होती, 24 बोतलें लेने. Take 24 bottles of Pepsi. That's how एक liter वाली, that's how much volume 1 mole of any gas will occupy. किसी गैस का भी 1 मोल आपके पास हो जनाबे वाला, that's gonna be equivalent to 24 पेप्सी की एक लीटर की बोतल. तो अगर आप 24 बोतलें लें, 1 8 2 3 and so on and so forth, 24 bottles, एक लीटर की पेप्सी की, दूध की, जो भी आप बोतलें लें, उतना वॉल्यूम 1 मोल ऑफ एनी गैस विल ऑक्यूपाई दैट मच वॉल्यूम एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर. हमारे कोर्स में सर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर ही है. इन मैट्रिक यू ऑल्सो स्टडी STP, जो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है. O levels and A levels में STP का कॉन्सेप्ट नहीं है. तो हमारा जितना भी गैस होगा, इट्स गोना बी एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट मस्ट बी अ गैस. You know, gases occupy volumes, right? So if I talk about fart, if I say you have 1 mole of fart, fart is a gas. How much volume will it occupy? How much volume will it occupy? How much volume will 1 mole of farts occupy? 24 dm cube. What if I say I don't like dm cube? What if I say, hey, मुझे ना लीटरों में बताएं? No, what if I say लीटर में बताएं? 24 liters, right? 24 bottles of Pepsi, एक लीटर की बोतल, right? But we are not going to use the word liter. It's just to visualize it for you. लोग समझते हैं कि पता नहीं 24 डेसीमीटर क्यूब कोई इतना छोटा सा वॉल्यूम है. नहीं भाई, 24 पेप्सी की बोतलें हैं एक लीटर वाली. So that's how much 1 mole of any gas is going to occupy. Okay, 1 mole of carbon dioxide. How much volume will it occupy? Because it's a gas. We know carbon dioxide is a gas. 24 dm cube. No, 1 mole of any gas, oxygen.
1 mole of oxygen is gonna occupy how much dm cube? 24 dm cube at room temperature and pressure. 1 mole of nitrogen, how much volume will it occupy, sir? 24 dm cube. 24 dm cube effectively is 24 liters. Effectively is 24 liters. Effectively means 24 liters, right? And what if I say I don't like decimeter cube? Tell me in terms of centimeter cube. Sir, 1 decimeter cube में 1000 centimeter cube आते हैं. So if 1 decimeter cube has 1000 centimeter cube, 24 dm cube should have how many centimeter cubes? X cross multiply 24,000. Right? जिनकी मैथ्स कमज़ोर है उनके लिए मैंने ये किया है. वैसे तो बड़ी सिंपल सी बात है. अगर 24 डीएम क्यूब है, 1 डीएम क्यूब 1000 सीएम क्यूब है, तो 24,000 सेंटीमीटर क्यूब हो गए, राइट? सो 24 डीएम क्यूब और 24 सेंटीमीटर क्यूब, 24,000 सेंटीमीटर क्यूब is the same thing. So if I say you have 1 mole of farts, that's equivalent to 24 dm cube. What if I say tell me in terms of centimeter cube? तो 3 zeros लगा दें. 24,000 cm cube. Tell me in terms of cm cube. 24,000 cm cube. Tell me in terms of cm cube. 24,000 cm cube. Thank you, Mohammad Abid, for the answer. Tell me in terms of cm cube. 24,000 cm cube. Sorry? ये कैसे कैलकुलेट किया? बहुत अच्छा सवाल है. आखिर में बताता हूँ. पहले खत्म तो करने दें, कैलकुलेशन सीख लें, फिर आखिर में सारी अच्छी बातें बताओ कि एवोगाड्रो ने क्या गेम खेली, सारी बातें बताता हूँ आपको. ठीक है जी. अच्छा जी, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी यार. ये पहले 4-5 दिनों की अपलोड हो जाएगी, टेंशन ना लो. पहले ये कर लें. ओके. व्हाट इफ आई से देयर इज 1 मोल ऑफ ए टॉक्सिक गैस. बड़ी गंदी टॉक्सिक सी गैस है. व्हाट इज द वॉल्यूम दैट इट विल ऑक्यूपाई एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर? 24 dm cube. That's what mole says. Mole says, hey, I can represent the volume of a gas at room temperature and pressure. That's going to be 24 dm cube, right? 24 Pepsi की बोतलें 1-1 लीटर वाली. और I can say 24 liters, और I can say 24,000 centimeter cube. ये centimeter cube कितना होता है? ये literally milliliter होता है. It's the British English for milliliters. तो जो मिलीलीटर, वो 1 मिलीलीटर की सिरिंज आपको लग रही होती है, वो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है. सो 24,000 सेंटीमीटर क्यूब ऑल्सो मीन्स 24,000 मिलीलीटर. सेंटीमीटर क्यूब एंड मिलीलीटर आर द सेम थिंग्स. डेसीमीटर क्यूब एंड लीटर आर द सेम थिंग. ये ब्रिटिश इंग्लिश है, ये अमेरिकन इंग्लिश है. भाई यही फर्क है. ये ब्रिटिश इंग्लिश है, ये अमेरिकन इंग्लिश है. दैट्स इट. So even in the future, if you are appearing for some American exams, you'll notice that they'll use liters and milliliters instead of decimeter cube and centimeter cube. Done? What if I say you have 1 mole of H2O. Pani, you have 1 mole of H2O. How much volume would this occupy? Come on, everybody. 24 decimeter cube, 24,000 centimeter cube. Oh, you dumbos, it's a liquid. Mole says I can only represent the volume of a gas at room temperature and pressure, not a liquid. Liquid के लिए अपने maths के formula है, L into L, वो कपों में डालते हैं. Sir, a mole can only represent the volume of gas at room temperature and pressure. Please keep this in mind. Highlight it, not liquid. So I cannot tell you the volume of 1 mole of H2O liquid. I cannot tell you this. Okay. What if I say you have 1 mole of sodium? How much volume would it occupy at room temperature and pressure? Oh no, you dumbo, not 24 decimeter cube. Why? Because it's a solid. A mole says I can only represent the volume of a gas at room temperature and pressure. That's gonna be 24 decimeter cube, 24,000 centimeter cube. Gas होगी तो volume. Okay, if I say you have 1 mole of H2O gas, which is steam. Yeah, this is water, this is steam. H2O solid को क्या कहते हैं? Ice. Yeah. So if I say you have 1 mole of H2O gas, yes, now that it's in its gaseous state, now you could say it has a volume of 24 decimeter cube or 24,000 centimeter cube. Done? Easy peasy lemon squeezy. अच्छा जी. What if I say you have 1 mole of HCl aqueous? ये aqueous क्या होता है आगे पढ़ेंगे. कोई किसी चीज को पानी में मिलाएं उसको हम aqueous कहते हैं. अच्छा, how much volume would this have?
Wawa, Noor Fatma, absolutely you are right. 24 dm cube or 24,000 centimeter cube. No, Noor Fatma, it's not a gas. It's not a gas. Only if it's a gas, it'll occupy a volume of 24 decimeter cube or 24,000 centimeter cube. Please understand that a mole can only represent the volume of gas. So why is this the case? I'll teach you at the end. It's not in your course. It's a very instructed course. लेकिन आखिर में जितने लोग ये वाई पूछते हैं इंशाल्लाह मैं सबका जवाब दूंगा. मुझे आता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ दूंगा जवाब. अच्छा, क्योंकि मैं भी ये सवाल पूछता था अपने आप से, तो मैंने बड़ा रिसर्च किया. अच्छा, व्हाट इफ आई से यू हैव 1 मोल ऑफ डस्टबिन, हाउ मच वॉल्यूम वुड दिस ऑक्यूपाई? अब खुद सोचिए, डस्टबिन गैस है, डस्टबिन गैस है. जीरो नहीं, दैट्स रॉन्ग. डस्टबिन का क्यों वॉल्यूम नहीं होता? Volume is the space, right? No, volume, dustbin ka volume hai, but a mole cannot represent the volume of this dustbin. So it must have a volume. You can calculate it through mathematics, but with a mole you can't tell its volume. I'm going to say, hey, I don't know, I can tell you guys this. Yeah? तो ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है कि it must be a gas. So now we know that a mole represents two things. It represents a number which is 6.02 into 10 raised to the power 23, and this can literally be anything, and it represents the volume of any gas. Remember, it must only be a gas at room temperature and pressure. Room temperature is 20 to 25 degrees Celsius and room pressure is about 1 atmosphere, and that's going to be 24 dm cube, aka 24,000 centimeter cube, right? डीएम क्यूब क्या होता है? लीटर होता है सर. सीएम क्यूब क्या होता है? मिली लीटर होता है. ये ब्रिटिश अंग्रेजी और दूसरी आपके पास अमेरिकन अंग्रेजी. डन. बट अ मोल सेज hold up doesn't. I can also represent something else. I can also, just give me a sec, I can also okay. So a mole says, hold up, I can also represent something else. I can represent something known as a molar mass. What do we mean by molar mass? Molar mass effectively is the mass of 1 mole of any substance. हालांकि ये बात भी बिल्कुल ठीक नहीं है, but O levels and IGCSE तक बिल्कुल ठीक है. So molar mass is the mass of 1 mole of any substance. So for example, think about this for a moment. I say you have 1 mole of sodium. How many sodium atoms do you have in 1 mole of sodium? How many sodium atoms do you have in 1 mole of sodium? 6.02 into 10 raised to the power 23 sodium atoms. Now I'm going to take these many sodium atoms and I'm going to weigh it. I'm going to weigh it on a top pan balance. And once I weigh it, do you know how much mass it shows? Do you know how much mass it gives me? It gives me a mass which is written in your periodic table. That is 23 grams. Yeah? So जो periodic table में बिल्कुल जी periodic table में जो लिखा, that's called the AR, right? But when you talk about the AR is something totally different. If I talk about the AR of sodium, that's 23 AMU. AMU क्या बोला है? It's a unit. For atom को जब हम measure करते हैं तो atom तो इतना छोटा है, हम उसको तो grams में measure नहीं कर सकते ना. You can't even see it with your naked eye. So it's 23 AMU. But the beauty is that when you take these many atoms of sodium and you weigh it on a top pan balance, you get exactly the same number as 23. तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि AR और molar mass effectively उनका magnitude same है. The magnitude for AR and molar mass is the same, but remember the units are different. The units are different. AR or molar mass are not the same. AR क्या बोला है? AR सर आपकी पीरियोडिक टेबल में जो लिखा हुआ है सोडियम क्या है, ये हम इंशाल्लाह चैप्टर 2 में इनके अंदर फुल डिफरेंसेस पढ़ेंगे. बट फॉर नाउ यू जस्ट नीड टू नो दैट दिस 23, द बिगर नंबर इन द पीरियोडिक टेबल इज द AR. ये एक एटम के मास की बात कर रहे हैं. हालांकि इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये एक एटम का मास है 23 AMU. AMU जो mass है वो इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे AMU का मतलब क्या है. But the mass of one atom, the average of a few atoms of sodium, it's 23. But if I take 6.02 into 10 is power 23 atoms of sodium, it exactly gives you the same number, which is 23. तो अगर मैं सोडियम के मोलर मास का बात करूं, दैट्स गोना बी 23 ग्राम पर मोल, जिसका मतलब है एक मोल ऑफ सोडियम में कितने ग्राम्स होंगे? 23 ग्राम्स होंगे. 1 मोल ऑफ सोडियम इज गोना वेट 23 ग्राम्स. और एक मोल ऑफ सोडियम होता कितना है? 6.02 into 10 raised to the power 23. So if I take 6.02 into 10 raised to the power 23 atoms of sodium and I weigh it on a top pan balance, it's going to give me the exact number which is written in your periodic table as 23 grams.
सर वी आर सेइंग दैट एक एटम का मास 23 ग्राम्स है और एक मोल ऑफ एटम्स का मास भी 23 ग्राम्स है. नो अलीन, वी आर सेइंग दैट एक एटम का मास है 23 AMU. AMU इज अ डिफरेंट यूनिट देन ग्राम्स. लेकिन एक मोल ऑफ एटम्स का मास बिल्कुल सोडियम के एटम्स का मास होगा 23 ग्राम्स. बेटा मैंने अभी मोलेकुलर मैथ्स पढ़ाया ही नहीं है, पता नहीं कौन मोलेकुलर मैथ्स और एटॉमिक मैथ्स की बात करे, मैंने अभी पढ़ाई ही नहीं है. सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज इफ आई टेक 1 मोल ऑफ कैल्शियम, go to the periodic table, calcium is 2040. So if I take 1 mole of calcium, how much is it going to weigh? 40. It's going to weigh 40 grams. 1 mole of calcium is going to weigh 40 grams. तो अगर मैं कैल्शियम की मोलर मास की बात करूं तो कैल्शियम का मोलर मास कितना है? 40 ग्राम पर मोल. मोलर मास का यूनिट क्या है? ग्राम पर मोल. एआर का यूनिट क्या है? AMU. कैल्शियम का AR कितना है? एक एटम की अगर हम बात करें तो क्या AR होगा? 40 AMU is the mass of effectively a few atoms of calcium, but 40 grams per mole is the molar mass. इसका फर्क मैं इसलिए बता रहा हूं, ये बाद में और भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन for now I'm telling you the difference because a mole does not represent AR or MR. A mole represents molar mass. अगर एक चीज का एक मोल मैं लूंगा, for example I take 1 mole of chairs. एक मोल ऑफ चेयर्स अगर मैं लूं और इसको मैं टॉप एंड बैलेंस पे रखूं, विच इज अ मशीन यूज्ड टू गिव यू द मेजर ऑफ मास, इसको अगर मैं टॉप एंड बैलेंस पे रखूं तो ये जो मास मुझे देगा इसको हम क्या कहते हैं? मोलर मास, which is effectively molar mass. ये नाम itself is very self-explanatory. The mass of 1 mole of any substance. That's called the molar mass, जो कि आपकी periodic table में given है. For example, I say, hey, you have carbon dioxide. Now, carbon in the periodic table is 12. Oxygen is 16. And how many oxygens do you have? 2. So what is the molar mass of carbon dioxide? 12 plus 16 times 2. That's 44 gram per mole. जिसका मतलब है कि अगर आप 6.02 into 10 is power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को किसी वेइंग मशीन पे रखे तो उसका मास कितना होगा? 44 ग्राम्स. डन. सो अ मोल इफेक्टिवली, जी 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 ब्रांड, क्यों नहीं मेजर कर सकते? क्यों नहीं मेजर कर सकते? मैं कह तो रहा हूं कि 1 मोल रिप्रेजेंट 6.02 into 10 is power 23 एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट. जी प्रैक्टिकली हम कैलकुलेशंस के थ्रू करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं कैलकुलेशंस के थ्रू. जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट, वो मैं आपको एंड में बता दूंगा है. अच्छा जी, सो अ मोल represents 3 things now. A mole represents 3 things. A mole represents a number which is 6.02 into 10 raised to the power 23, and this can literally be anything. A mole represents the volume of gas at room temperature and pressure. Remember, it must only be a gas, which is going to be what? 24 dm cube or 24,000 cm cube. And a mole also represents the molar mass. It's the mass of 1 mole of any substance. किसी भी चीज़ का एक मोल लें और उसका mass measure करें तो वो आपके पास मोल represent करते हैं. For example, if I say sodium, so sodium in the periodic table is 1123. So the molar mass of sodium is going to be 23 gram per mole. मतलब क्या है कि एक मोल ऑफ सोडियम में इफेक्टिवली अगर आप 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम ले और उसको एक वेइंग मशीन पे रखें तो ये आपके पास 23 ग्राम्स वे करेंगे. अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, कार्बन इज 612, ऑक्सीजन इज 816. तो अगर इनको हम ऐड करें, कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 16 एंड यू हैव 2 O's, so times it by 2, that's going to give me what? 44. So the molar mass of carbon dioxide is 44 gram per mole, not 44 AMU. AMU atomic relative atomic mass होता है, वो बाद में हम पढ़ेंगे, right? तो इसका मतलब है if I take 1 mole of carbon dioxide molecules and I place it on a top and balance, that's gonna weigh 44 grams. Done? खत्म. अच्छा, अगर मैं बात करूं just give me 1 second. If I say, hey, you have 1 mole of carbon dioxide, can you guys tell me how many molecules would I have? It's a gas. How many molecules would I have? How many 6.02 into 10 is power 23 molecules. Of what? Of CO2. If I say, can you represent the volume? Can you tell me how much volume it will occupy? How much?
24 dm cube or 24,000 centimeter cube. If I don't like dm cube, can I say what is the mass of 1 mole of carbon dioxide? What's the molar mass effectively? Molar mass kya hai? Yeah, so 44 gram per mole is the molar mass, right? एक मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में 44 ग्राम्स होंगे. कैसे आपको पता सर? 12 प्लस ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स इट बाय 2 बिकॉज यू हैव 2 so 44. डन. ग्राम पर मोल मतलब एक मोल ऑफ CO2 लें और उसको बैलेंस पे रखें तो उसका मास कितना होगा? 44 ग्राम्स. ओके 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 ओके. If I say you have 1 mole of sodium, sir, what is the number of particles? What is the number in 1 mole of sodium? 6.02 into 10 is about 23. Atoms or molecules? Sodium is an element. It's not combined with any other thing. It's alone. So it's obviously gonna be consisting of the sodium atoms. Atoms or molecules में हम फर्क chapter 1-2 में सीखेंगे दोबारा. And if I say what is the volume? 24 dm cube or 24,000 centimeter cube? Absolutely, you are right. You are right. We cannot measure it because it's a solid. It's not a gas. Okay. So if I say what's the molar mass? You look at your periodic table. In your periodic table, it's 1123. The bigger number is obviously effectively the molar mass for you. So 23 gram per mole. मतलब अगर मैं इतने सारे एटम सोडियम की लूँ और उसको वेइंग मशीन पे रखूँ तो वो मुझे 23 ग्राम्स का वेइंग दे देगा. डन. इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी. मैं बता दूंगा थोड़ी एंड में बता दूंगा, दोबारा बता दूंगा. ओके. नाउ इफ आई गो एंड आस्क यू गाइस, हे अच्छा इसका यूज़ किधर आता है? इसका यूज़ किधर आता है? देखिए आप एक लेबॉर्ट्री में काम कर रहे हैं ना, तो आपको एक साइंटिस्ट कहता है कि गिव मी 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ यू गो टू योर लेबॉर्ट्री एंड यू सी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में, तो कितना गैस निकालेंगे? हाउ मच गैस वुड आई टेक आउट? हाउ मच गैस वुड आई टेक आउट? 24 dm क्यूब. 24 लीटर निकालूंगा. अगर मुझे कहे साइंटिस्ट कि भाई मुझे 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ला के दो, एंड आई गो टू माई लेबोरेटरी एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज इन इट्स सॉलिड फॉर्म, सो व्हाट एम आई गोना डू? आई एम गोना से हे 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नीड्स आई नीड टू मेजर 44 ग्राम्स. तो मैं 44 ग्राम्स टॉप एंड बैलेंस में मेजर करके उसको दे दूंगा. And if I somehow I can see the molecules, which is impossible, but if I can see the molecules, I'm gonna count कि भाई इतने molecules हैं और ये ले ले 1 mole of carbon dioxide. So that's the practical use of it, right? A mole, unlike a dozen. पहले मैंने like कहा था, now it's unlike. A dozen can only represent a number, which is 12. A mole can represent a number which is 6.02 into 10 to the power 23. It can represent the volume of a gas at room temperature and pressure, but it's going to be 24 dm cube or 24,000 centimeter cube. And it can also represent molar mass. Molar mass क्या होता है? किसी भी चीज़ का एक मोल ले और उसको मशीन में डालें और वो जो मास होगा उसको मोलर मास कहते हैं सर. तो अगर हम किसी भी एलिमेंट ले लें या मॉलिक्यूल ले लें, उसको हम उसके 6.02 into 10 is power 23 पार्टिकल्स ले लें और उसको मेजर करें, वो उसका मोलर मास होगा जो कि आपकी पीरियोडिक टेबल में गिवन है. डन. ओके जी. नाउ इफ आई से हे 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सर? 6.02 into 10 is power 23 molecules. How many molecules are there in 2 moles of carbon dioxide? Multiplied by 2. But जिनकी maths कमजोर है मैं कह दूंगा 1 mole of carbon dioxide has these many molecules, so 2 moles would have x, cross multiply, what would you get? X is equal to 6.02 into 10 is the power 23 times 2. अब ये x क्या वाला है? ये x क्या था? These were the number of molecules which I wanted to find. So this was the number. This was the number which I wanted to find. 6.02 into 10 is power 23. इसको हम Avogadro's constant कहते हैं, or you could just say 6.02 into 10 is power 2. Avogadro was the guy who came up with this. So if you want to calculate the number of particles in any thing, you will take the Avogadro's constant and times it. ये 2 क्या चीज़ थी? 2 क्या चीज़ थी? It was the moles. So times it, mole को हम n से represent करते हैं. So if you want to find the number of particles of anything, you're going to take the moles and times it by 6.02 into 10 is power 23, which is effectively the Avogadro's constant. तो ये जो आपके formulas हैं, they are effectively just cross multiplication. क्या है? एक मोल में अगर आपके पास
इतने पार्टिकल्स हैं तो 2 में कितने होंगे या 4 में कितने होंगे, 4 मोल्स में आपके पास कितने होंगे, x। तो क्रॉस मल्टी, लेकिन चूंकि आपके टीचर्स आपको फॉर्मूले सिखाते हैं तो मैं भी फॉर्मूलों का इस्तेमाल करूंगा, वरना कॉन्सेप्ट मैंने दे दी सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। कैसे करेंगे, इफ आई वांट टू फाइंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 4 मोल्स ऑफ सोडियम, व्हाट एम आई गोना डू, आई विल टेक द मोल्स एंड टाइम्स इट बाय 6.02 into 10 is power 23। मोल्स कितने हैं सर, 4, सो 4 times 6.02 into 10 is power 23। क्यों ये किया, क्योंकि एक मोल ऑफ सोडियम में इफेक्टिवली इतने पार्टिकल्स हैं, तो 4 में कितने होंगे, x क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये मैंने इसलिए किया, तो अगर मैं पार्टिकल्स, इफ आई वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, दे ऑल कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स हम इन सबको कहते हैं। पार्टिकल्स में एटम्स भी आ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं, आयंस वगैरह भी आ जाते हैं, राइट। पार्टिकल्स में सब कुछ आ जाते हैं। सो इफ आई वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ एनीथिंग, आई विल टेक द मोल्स एंड टाइम्स इट बाय 6.02 into 10 is power 23। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, राइट। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं समरी में बात करूं, तो मोल एक नंबर रिप्रेजेंट करता है विच इज 6.02 into 10 is power 23। मोल वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट करता है। वॉल्यूम कैसे, अच्छा अगर मैं कहूँ 1 mole of farts occupy a volume of 24 dm cube, right? We all know that now. 1 mole of farts is going to occupy 24 decimeter cube. What if I say you have 5 moles of farts? How much volume will it occupy? X cross multiply, sir. What are you going to get? X equals 5 times 24. अब X क्या था? X was the volume that I wanted to calculate. V, right? And 5 क्या बोला है? 5 are the number of moles which I will represent with N. And 24 क्या है? That's also the number right here. That's the volume. So if you want to calculate the volume of any gas at room temperature and pressure, you will take the moles and times it by 24. So 5 times 24 effectively is 120 dm cube. Done? अच्छा अगर मैं कहूँ सेंटीमीटर क्यूब में बताएं, तो टाइम्स इट बाय 24 और 24,000 इफ यू वांट टू कैलकुलेट इट इन सीएम क्यूब। डन, सिंपल। अच्छा 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 अच्छा, तो मैं कह सकता हूँ अ मोल रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज गोना बी 24 dm क्यूब। दैट्स द सेकंड फॉर्मूला, दैट्स द सेकंड फॉर्मूला। अच्छा तीसरी बात करें। ओके, इफ आई से 1 मोल ऑफ सोडियम हैज हाउ मेनी ग्राम्स, periodic table 23 grams. You can literally check this out from the periodic table. So if one mole of sodium, okay, 1 mole of sodium. So if 1 mole of sodium has 23 grams, let's say 6 moles of sodium would have how many grams? X, obviously. So 23 into 6 cross multiply 23 or 6 times 23. अब ये x क्या बोला था? This was the mass that I wanted to calculate, right? तो अगर मैं किसी भी चीज़ का mass calculate करना चाहता हूँ, तो I'm gonna take the moles and times it by the molar mass or the mass of 1 mole of this substance, जो कि आपको periodic table से मिलेगा। Done? So this is the third formula. So effectively अगर मैं बात करूँ, a mole can also represent the molar mass, right? अच्छा जी, अब देखिएगा, if I want to calculate the number of something, what am I going to do? I'll take the moles and I'll times it by 6.02 into 10 is power 23. That's the first formula. If I want to calculate the volume of something, what am I going to do? I'll take the moles and times it by 24. And if I want to find the mass of any substance, what am I going to do? I'll take the moles and times it by the molar mass. So this is the web that has been created. This is literally your entire moles in stoichiometry. अगर ये समझ आ गई तो आगे हलवा है, हलवा, right? अच्छा, अब हम बात करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं. What if I say you have 7 moles of carbon dioxide? Calculate करके दें, शाबाश. Calculate the number of molecules. Calculate the number of the volume it will occupy, and calculate, sir, please for me, calculate the mass. कैसे करेंगे प्लीज? इफ यू गाइस कैन कैलकुलेट दिस, यू आर गुची. आप लोगों का 95% मोल्स खत्म. हाँ जी, मॉलिक्यूल्स नंबर है, नंबर के लिए क्या करें? टेक द मोल्स टाइम्स इट बाय 6.02 into 10 is power 23. सर मोल्स कितने हैं? 7 into 6.02 into 10 to the power 23. आपके पास आंसर आ जाएगा. वॉल्यूम फाइंड करना है. टेक द मोल्स, 7 मोल्स हैं, टाइम्स इट बाय 24, और इफ यू वांट इट इन सेंटीमीटर क्यूब, times it by 24,000 centimeter cube. Done? And if you want to find the mass, take the moles and times it by molar mass. What's the molar mass of carbon dioxide? Mm.
What's the molar mass, sir? 44 gram per mole. So mass equals mole is 7 and times it by 44. What do you get? Easy peasy lemon squeezy. If you guys were able to do this, वो हलवा है. अच्छा चलें एक और करें 6 moles of sodium of H2O gas हमें क्या तीन चीज़ें बताते हैं. चलो 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 शाबाश. और 3 moles of sodium solid हमें क्या तीन चीज़ें बताता है. शाबाश, कैलकुलेट करके दे. शाबाश शाबाश शाबाश, आई एम वेटिंग. सो 6 moles of H2O गैस हमें क्या तीन चीज़ें बता के देते हैं. नाउ इट शुड क्लिक. तीन बातें बताते हैं हमें. हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं, हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हैं. शाबाश, कैलकुलेट करें ना, कैलकुलेट करें. शाबाश, कैलकुलेट इट प्लीज. जल्दी जल्दी जल्दी. ओके जनाब, तो पहले हम क्या करें. मोल्स हैं. इफ आई वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर मॉलिक्यूल्स, राइट. H2 एक मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल्स अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ कैसे करूंगा. आई टेक द मोल्स and times it by 6.02 into 10 to the power 23. These will give me the molecules of H2O. If I want to calculate the volume, I'm take the moles and times it by 24 dm cube or 24,000 centimeter cube. If I want to find the mass, I'll take the moles and times it by the molar mass. Molar mass periodic table से calculate होता है. 1 times 2, hydrogen is 1. So 1 times 2 because you have 2 hydrogens plus 16 and you have 1 oxygen, right? So that's going to be 18. What am I going to get? So what is this? Molecules is equal to mole times 6.02 into 10 is power 23. Volume equals mole times 24. Mass equals mole times molar mass. That's it. Literally. Halwa. अच्छा जी, sodium solid. Atoms. कितने atoms है sodium में? Sir, take the moles times it by 6.02 into 10 to the power 23. कितना mass है? Take the moles times it by molar mass जो periodic table में 23. कितना वॉल्यूम है. टेक द मोल्स टाइम्स इट बाय 24 और 24. Yes, absolutely, everybody is right. You can't calculate the volume because it's a solid, it's not a gas, and that's it guys, that's it. और अच्छा, हमने आखिर में ये जाके सीखना है कि ये गोल्ड के एटम्स की जो मैंने बात की ना शुरू में, कि गोल्ड के एटम्स में, गोल्ड के अंदर 1 bar of gold contains 4 into 10 is to power 24 atoms or 25 atoms and a human body has these many. ये मैं आपको कैलकुलेट करके सिखाऊंगा and this will be your magic. आप सबके सामने हर चीज़ के एटम्स कैलकुलेट करके देंगे इंशाल्लाह. ठीक है, तो वो हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे. वो शुरू में आपको थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग बातें बतानी थी. बाकी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे, मुझे सर सुलेमान को कैसे पता चला कि गोल्ड के बारे में इतने एटम्स हैं. मुझे आप अपने बारे में बताएं, मैं आपको भी बता दूंगा कि आपकी बॉडी में कितने एटम्स हैं. तो ये इंशाल्लाह हम आपको कैलकुलेट करके बताएं. एनी क्वेश्चंस व्हाटसोएवर गाइस? No, Aline, you cannot calculate the liquid volume. Yes, Aline, you are right, you can. जी मोहम्मद जरार साहब जी बोले. I just resumed the recording just to say that I will solve each and every question with you guys, and after you are done, you will be able to solve every question on the fates of planet Earth. ठीक है जी, तो इंशाल्लाह हो जाएगा.